Assalamu alaikum, dear students. Students, after the examples of the adsorption, let us begin with the mechanism of the adsorption. Okay, so the amount of the heat involved when one mole of the adsorbate is adsorbed on the adsorbent surface is called enthalpy of adsorption. Okay, adsorption is always an exothermic process, and enthalpy, that is delta H of the adsorption, is always negative. When adsorbate molecules are adsorbed on the surface of an adsorbent, the freedom of the movement becomes restricted and hence the entropy, that is delta S, decreases. So dear student, first of all you need to understand that system's enthalpy, that is delta H, is becoming negative, because just imagine if the particles are having more energy, they will not come and sit on your adsorbate. It will be not able to sit on the surface. Okay, it means that they have to lose their energy. When they are going to lose their energy, then only they will be able to sit on the surface. If they have more energy, they cannot. Similarly, what happens, the particles which are going to settle down on the surface, they are also going to lose their energy. As they are going to lose their energy, what will happen? They will start to just accumulate on one place. It means their movement is decreased now. It means their entropy is decreasing. So in this case, we are able to see that delta H is also negative and delta S is also negative. We know that Gibbs free energy, the formula delta G is equal to delta H minus T delta S. We are knowing this formula, right, since class 11. So here, when you are getting the value of delta G as a negative, the process is spontaneous. You know, negative value shows that the process is it is done by its own. It is spontaneous. You don't need to do it anything. आपको वो जो गैसेस के पार्टिकल्स है उसको आपका जो चारकोल है उस पर नहीं बिठाना है, वो अपने आप ही बैठेगा. राइट, सो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला प्रोसेस. इज इट ओके? सो दिस इज द वे वेयर योर मैकेनिज्म ऑफ द एब्जॉर्प्शन shows that it is spontaneous and delta H and delta S values are coming in the negative. Is it clear? At one stage it will stop when there will be the equilibrium arises. एक पार्टिकल बैठा, उसी टाइम पे एक पार्टिकल का निकल जाना. Okay, now very important one, physical adsorption and chemical adsorption. There are two types of the adsorption, that is physical adsorption and chemical adsorption. So dear students, let us see each point of your physical adsorption and chemical adsorption. They are also called Physisorption and Chemisorption. Okay, the forces operating in this cases are weak van der Waals forces. आपका जो physical adsorption है वहाँ पे surface पे आपके particles जो बैठते हैं, that is because of the physical weak van der Waals forces. Okay, chemical adsorption में bond बनता है आपके particle और surface के बीच में. So the forces operating are the chemical bonds. It may be ionic, it may be covalent. Second point, heat of adsorption is low. Heat of adsorption कम होता है 20 to 40 kilojoule per mole, that particular. And यहाँ पे chemisorption में heat of adsorption are high, that is 40 to 400 kilojoule per mole. Okay. Third point, the process is reversible, that is desorption can be occurred by increasing terms or increasing temperature or decreasing pressure. आपका ये जो फिजिसॉर्प्शन है वो कैसा है? रिवर्सिबल. पार्टिकल आया, सरफेस पे बैठा और तुरंत ही निकल जाएगा. जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है? द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. इफोर्ट टू फ्री द एब्जॉर्बेड गैस गिव्स डिफरेंट कंपाउंड्स. आप यहाँ पे जो पार्टिकल्स आके सेट हो रहे हैं, वो जब सेट हो रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनने के बाद जब वो बाहर निकल रहा है तो हो सकता है कि पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन होके बाहर निकले. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस आके स्टक हो रहा है और क्लोरीन गैस आके स्टक हो रहा है. तो हाइड्रोजन का सरफेस के साथ बॉन्डिंग बना, क्लोरीन का सरफेस के साथ बॉन्डिंग बना. इसके बाद क्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन सकता है और जब वो बाहर निकले तो वो HCl बन के निकले. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. तो यहाँ पे कंपाउंड चेंज हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी. आपके पार्टिकल्स को सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए सरफेस पे आके बैठना है और निकल जाना है. तो एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिजिसॉर्प्शन. बट केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड. क्यों? क्योंकि वहां पर बॉन्ड बनता है. ठीक है, ओके. Number 5, it takes place at the low temperature and decrease with the temperature decrease with the increase in the temperature. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स आए, सरफेस पे बैठे, ठीक है,
सरफेस पे बैठने के बाद क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टिकल्स है उनको अगर एनर्जी मिली, टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या करेंगे, एनर्जी लेकर निकल जाएंगे. सो दैट इज वाई दे आर डिक्रीजिंग व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. बट केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो सरफेस है, आपका जो सरफेस है जिसपे पार्टिकल बैठ रहा है, उसको बॉन्ड बनाना है, इसलिए वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड है. यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं. सो दैट टाइम इट इज डिक्रीजिंग. फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. ओके, 6th point over here, it is not specific in nature all gases. It is not specific. Okay, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो फिजिक्स ऑप्शन है उसमें आपका सरफेस कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर रहा है कि मैं तो अपनी सरफेस पे इस गैस को बिठाने दूं, दूसरे गैस को बैठने दूं, इसको ना बैठने दूं. मतलब वहां पे क्या है, चॉइस नहीं है. क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स कुछ सेकंड के लिए ही सरफेस पे बैठेंगे और निकल जाएंगे. जबकि आपके केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, occurs only by the possibility of the formation of chemical bond. आपका जो केमिसॉर्प्शन है उसमें पार्टिकल्स जो सरफेस पे आके बैठेंगे उसमें चॉइस है कि वो इसी पर्टिकुलर को बैठने देगा जिसके साथ उसका बॉन्ड बन सकता है. ठीक है, तो फिजिक्स में चॉइस नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन. बट केमिसॉर्प्शन में इट इज स्पेसिफिक. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, दैट इज ऑफ द एब्जॉर्प्शन. और आपका केमिसॉर्प्शन में भी यही हो रहा है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया. तो कॉमन सेंस की बात है, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना आपका फिजिक्सॉर्प्शन हो या केमिसॉर्प्शन हो, दोनों बढ़ता है. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट फॉर्म्स द मल्टी लेयर. एक के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर. क्यों ये हो रहा है, क्योंकि ये फिजिक्स ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड तो बनता है नहीं. और केमिसॉर्प्शन में क्या है, इट फॉर्म्स द यूनी लेयर. रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज इट इज वेरी स्पेसिफिक. एक ही पर्टिकुलर बॉन्ड वहां पे बनेगा तो एक ही लेयर बनेगा. इज इट क्लियर? सो दिस आर द क्लियर डिफरेंस बिटवीन फिजिक्सॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड इन द बोर्ड. Dear student, let me tell you, Physisorption and Chemisorption is one of the favorite question of the board examiners. They are most probably asking you this question, that give the difference between Physisorption and Chemisorption, or else they may ask you any one. But remember, these are the 8-9 points which you have to compulsorily you have to do it. आपको ये points prepare करने ही पड़ेंगे. ये topic ऐसा है जिसको आप skip out नहीं कर सकते हो. You have to do with this one very clearly. So I am telling you that if you are having any doubt in this particular Physisorption, Chemisorption points which I have just discussed right now, just you can ask in the comment section also. Okay, but do not skip out this topic. This is very important topic, Physisorption and Chemisorption. I hope the topic is clear. From absorption isotherm we will start in the next video.